welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर करीना कपूर खान ने किस तरह किया सब वुमेन को इंस्पायर? क्यों नेटिजन्स बुला रहे हैं उर्फी, जावेद और राखी सावंत को गुरु चेला? सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कि क्यों उनके नाम पर non-bailable warrant निकला है. करीना कपूर खान ने वुमेन्स डे पर लिखा एक स्पेशल नोट. करीना कपूर खान ने रिसेंटली कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया कि लोग हो जाएंगे उनके दीवाने. करीना कपूर खान ने अपने साइज 0 फिगर से साइज 16 तक के सफर के बारे में लिखा एक इंस्पायरिंग पोस्ट. करीना कपूर खान को उनके वेट बढ़ने को लेकर लोगों ने किया ट्रोल. जैसा कि आपको पता है, हर बॉलीवुड सेलिब्रिटी अपने फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहता है और फैंस सेलिब्रिटीज के जिम सेशंस की पिक्स भी बहुत पसंद करते हैं. करीना कपूर खान यानी हम सब की फेवरेट बेबो, जो अपने साइज 0 फिगर के लिए मशहूर हैं, शी शेयर्ड एन इंस्पायरिंग नोट ऑन बॉडी पॉजिटिविटी ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल. करीना कपूर खान ने इस पोस्ट से अपनी सारी फीमेल फैंस को मोटिवेट किया है. करीना कपूर खान ने नोट शेयर करते हुए लिखा, Whether a messy hair day or a glammed up outing or going from size 0 to size 16, I have thoroughly lived and enjoyed every phase of my life. During my pregnancy, I gained 25 kgs. But I never allowed that to interfere with doing the things I love. I remember being 8 months pregnant when I did a photo shoot and had so much fun being confident in my skin and flaunting my baby bump. So to all the girls reading this, it's your life and your decisions are the only ones that matter always. लास्ट ईयर फरवरी में बेबो दूसरी बार मां बनी, जिसके बाद उनका 25 किलोज वेट बढ़ गया था. बेबो के कुछ वायरल पिक्स में लोगों ने कमेंट करके उनके फिटनेस पर सवाल उठाए और उन्हें ट्रोल किया. एक यूजर ने कहा मोटी हो गई है, एक और यूजर ने कहा बेबो को फिर से एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए. एक यूजर ने कहा क्या ये वही बेबो है जो फिटनेस और योगा के लिए जानी जाती है? और एक यूजर ने बेबो के एटीट्यूड के लिए भी उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन इन सब नेगेटिव कमेंट्स के बीच एक यूजर ने बेबो के सपोर्ट में एक स्वीट कमेंट किया. फैन ने लिखा, Why don't understand why people call her arrogant, घमंडी and blah blah. If we are human, these celebrities also. If we have mood swings, they have also. हमेशा पोज करना for paps is not possible. कल सबने कितना कुछ बोल दिया, पोज नहीं दिया तो. Because she was holding her kid and she was busy talking with her family. But she posed in the morning when she was with Taimur. We need to stop judging people. बेबो 2 बच्चों की मां है, लेकिन आज भी बेहद खूबसूरत लगती हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो करीना कपूर खान और आमिर खान फिर से एक बार साथ में नजर आने वाले हैं उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा में. फैंस बेबो का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. ये मेरा सेकंड अवार्ड है दादा साहेब फाल्के से. लास्ट ईयर भी हम सब बात कर रहे थे फॉर गिल्टी और इस साल फॉर शेरशाह. आई थिंक it's very motivating. I hope next year and the years to follow I keep being able to share my love with you through my work and receive that same love which I look forward to. क्या कियारा अडवाणी को मिल गया उनका ड्रीम प्रोजेक्ट? क्या आलिया भट्ट के बाद कियारा अडवाणी होंगी संजय लीला भंसाली की हीरोइन? कियारा अडवाणी की विश लिस्ट में है संजय लीला भंसाली की हीरोइन बनना. शेरशाह गर्ल कियारा अडवाणी अपनी खूबसूरती की वजह से सोशल मीडिया में छाई रहती हैं. कियारा अडवाणी अपनी फिल्म शेरशाह की कामयाबी को आज भी एंजॉय कर रही हैं और अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की तैयारी में बिजी हैं. कियारा अडवाणी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इस साल के एंड तक संजय लीला भंसाली की फिल्म को साइन करना है और उनकी विश लिस्ट में संजय लीला भंसाली की हीरोइन बनना है. वैसे संजय लीला भंसाली की फिल्म में लीड रोल प्ले करने की इच्छा सिर्फ हर हीरोइन की ही नहीं, हर एक्टर की विश लिस्ट में होती है.
संजय लीला भंसाली को जाना जाता है कि वो अपने एक्टर्स से बहुत अच्छे से काम निकालते हैं और उन्हें एक अलग मुकाम पर पहुंचा देते हैं। हाल ही में गंगूबाई काठियावाड़ी देखकर शायद कियारा अडवाणी भी हो गई है एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की बड़ी फैन। गंगूबाई काठियावाड़ी की सक्सेस के बाद हर कोई यही अंदाजा लगा रहा है कि संजय लीला भंसाली की अगली हीरोइन कौन होगी। क्या गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद एक बार फिर संजय लीला भंसाली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म बनाएंगे या फिर से बाजीराव मस्तानी जैसी हीरो वाली फिल्म बनाएंगे? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल कियारा अडवाणी अपनी इस साल की 3 विशेस पर फोकस कर रही हैं। एक तो है संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करना और खुद ट्रैवल करना और इसके साथ ही शूटिंग करते रहना। कियारा अडवाणी को उनकी सुपरहिट फिल्म शेरशाह के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कियारा अडवाणी ने इस बारे में कहा कि My heart is filled with gratitude and to be honest, this film is everyone's film. We all know the story and now everywhere I go, everyone feels that they know Captain Vikram Batra and Dimple through us. People have felt that they belong to those two people. To get such a prestigious award for such a special film, I'm feeling happy with a lot of gratitude. हमें पता है फैंस भी कियारा अडवाणी और संजय लीला भंसाली की फिल्म देखना चाहते हैं और फैंस इसके लिए बेहद एक्साइटेड भी हैं। कियारा अडवाणी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी खूबसूरत पिक्स अपलोड करती रहती हैं। उनकी एक पिक बड़ी वायरल हो रही है। इस पिक में कियारा अडवाणी अपनी सिस्टर के साथ हैं और उन्हें तैयार कर रही हैं। दरअसल ये पिक कियारा अडवाणी की सिस्टर की शादी की है एंड कियारा अडवाणी हैज बीन मेकिंग सम ethereal fashion statements too at her sister's wedding celebrations. One of her looks saw her wearing an orange and golden lehenga. She accessorized the look with some pretty yellow roses tucked into her neat bun. क्या सोनाक्षी सिन्हा को होने वाली है जेल? क्या दिल्ली में एक इवेंट में ना आने पर सोनाक्षी सिन्हा पर होगा केस? सोनाक्षी सिन्हा ने खुद सब कुछ क्लैरिफाई किया है अपने नॉन-बेलेबल वारंट पर। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा के बारे में एक न्यूज आई है जिसमें ये कहा गया है कि सोनाक्षी सिन्हा का दिल्ली में एक इवेंट होने वाला था, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा इवेंट पर पहुंची नहीं और सोनाक्षी सिन्हा के मैनेजर ने 37 लाख जो कि सोनाक्षी सिन्हा की इवेंट की फीस थी उसको देने से मना कर दिया था, जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा पर दिल्ली में पुलिस रिपोर्ट लिखवाई गई और अब सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ नॉन-बेलेबल वारंट जारी हो गया है। इस न्यूज के आने के बाद सोनाक्षी सिन्हा के फैंस काफी परेशान हो गए थे। ये खबर सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई और सोनाक्षी सिन्हा तक भी पहुंच गई। इस पर सोनाक्षी सिन्हा ने तुरंत क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ये सब फेक न्यूज है और जिस किसी ने भी ये किया उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगी। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि There have been rumors of a non-bailable warrant issued against me floating in the media without any verification from any authorities since a few days now. This is pure fiction and the work of a rogue individual trying to harass me. I request all media houses, journalists and news reporters not to carry this fake news as it is playing into this individual's agenda to gain publicity. सोनाक्षी सिन्हा ने आगे कहा है कि उनकी लीगल टीम इस पर नजर बनाए है और जो कोई भी ये कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। सोनाक्षी सिन्हा ने कहा है कि दिस मैन इज प्योरली ट्राइंग टू गेन सम पब्लिसिटी एंड एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम मी बाय अटैकिंग माय रेपुटेशन व्हिच आई हैव वेरी प्राउडली बिल्ट ओवर द इयर्स. By planting these malicious articles in the media, kindly do not participate in this harassment charade. This matter is sub judice before the Moradabad court and has been stayed by the Allahabad High Court. My legal team will be taking all the necessary action against him for contempt of court. This will be my only comment on this matter until the Moradabad court has passed its verdict. So please do not approach me for the same. I am home and I can assure you there are no warrants issued against me. इस पर भी नेटिजन्स ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, हमें कैसे पता सच क्या है झूठ क्या है, सही और गलत का फैसला तो कोर्ट करेगा।
सेलिब्रिटीज के साथ फेक न्यूज आना कोई नई बात नहीं है। इस तरह की न्यूज आती रहती है। हाल ही में सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की शादी की एक फोटो भी वायरल हुई थी, जो कि पूरी तरह से फेक थी। लेकिन कुछ लोगों को एक पल के लिए लगा कि सच में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की शादी हो गई है। इस पर रिएक्ट करते हुए सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा है, आर यू डम? क्या राखी सावंत को मिल गई है उनकी जोड़ीदार? राखी सावंत और उर्फी जावेद का हुआ साथ में एक वीडियो वायरल। राखी सावंत और उर्फी जावेद को क्यों कहा लोगों ने गुरु चेला? क्या उर्फी जावेद भी निकल गई हैं राखी सावंत की राह पर? राखी सावंत यानी एंटरटेनमेंट क्वीन। राखी सावंत जहां भी जाती हैं वहां न्यूज बन जाती है और कोई धमाल हो जाता है। यहाँ पे राखी 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 यहाँ पे राखी हाल ही में राखी सावंत को रेड कार्पेट पर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ मस्ती करते हुए देखा गया। रणवीर सिंह और राखी सावंत की पिक्स और वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं। रणवीर सिंह और राखी सावंत ने पैप्स के साथ बहुत मस्ती मजाक भी किया। बिग बॉस OTT कंटेस्टेंट उर्फी जावेद हाल ही में राखी सावंत के साथ नजर आईं। She was dressed in an animal print Bardo style top and paired it up with a black pencil skirt. Rakhi Sawant wore an quad set that included a bralette and matching leggings. राखी सावंत और उर्फी जावेद का साथ में एक वीडियो वायरल भी हुआ है, जिसमें राखी सावंत उर्फी जावेद को सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए मना रही हैं, लेकिन उर्फी जावेद मना करती हैं। फाइनली उर्फी जावेद को एक सिप लेना पड़ता है। उर्फी जावेद सिप लेते हुए कहती हैं कि बहुत प्यास लगी है। बाप रे, क्या उर्फी जावेद को सच में प्यास लगी थी या उन्होंने राखी सावंत का दिल रखने के लिए ये कहा? ये तो अब उर्फी जावेद ही बता सकती हैं। लेकिन दोनों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों के इस वीडियो पर फैंस ने किए हैं कुछ अजीब और गरीब कमेंट। एक फैन ने दोनों को ट्रोल करते हुए लिखा, दोनों एक जैसी हैं, पगलिया। दूसरे ने कमेंट किया, दो पागल औरतें एक साथ। एक ने लिखा है, 2 नमूनीज इन 1 फ्रेम, गुरु और चेला एक साथ। इंटरनली राखी सावंत सेइंग, पानी पी ले और थोड़ा मेहनत कर, मेरे जैसा बन जाएगी। बहुत प्यास लगी फैंस ने दोनों के वीडियो पर काफी सारे कमेंट्स किए हैं। कुछ लोगों ने तो इतना तक कह दिया कि दोनों की दोनों बकवास हैं। Rakhi Sawant and Urfi Javed posed together for the paps. Many believe that Urfi Javed and Rakhi Sawant are similar because of the way they dress. Now fans are reacting on them coming together. Rakhi Sawant के चक्कर में Urfi Javed को भी लोगों ने खूब ट्रोल किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग Urfi Javed से प्यार नहीं करते। फैंस Rakhi Sawant और Urfi Javed दोनों को बहुत प्यार भी देते हैं। Coming up on the show, International Women's Day special में Aditi Rao Hydari ने Zoom से किया exclusively interact. Hello everyone, I'm Rani and welcome to a special Women's Day edition of Speak Easy. My guest today is brilliant and a proud feminist. Her ideals is often reflected in her works and she is absolutely fabulous. I'm talking about Aditi Rao Hydari. Hello and happy Women's Day. How are you? I'm good. How are you doing? I'm good. Your work has often reflected your ideals of what you believe in, and that's walking the talk, right? Tell me how important that is for you. I can't imagine doing it any other way, honestly, because there have been times when people out of love and care advise you to do certain things, or and then I do listen. I listen, but ultimately I do what I think is right, because it's very important to be able to look at yourself in the mirror and to sleep well at night, for me. And all the things that you have said to me, it's not only something that I've done by design. It's really something that I have done because to me it is the most natural thing to do that, As humans, we tend to judge other people a lot more.
I feel female actors particularly receive so much judgment for what they're doing, and they're being scrutinized so much. And of course, I think the perceptions that are put forward also when people don't know you are completely opposite to who you are. Tell me if you faced that. And, how did you sort of rise above it? I think everybody does what they need to do. To say it very simply, you can either start listening to everything that everybody says, or you can believe very strongly in what it is that you believe in and live the life that you think you want to live, or the dreams that you have. And I think it's so important to choose, because your choices make you who you are. And for you to choose with the right intention, and when I say right intention, I don't say that with judgment. When I say right intention, I mean the right intention for you, and I think these are very important things. People, and I've realized, people love to bring people down. I'm not sure why that is. I don't understand why they revel in like somebody's misery so much, but people do enjoy that a lot. And people don't give people too many opportunities, honestly. It takes that one thing, and suddenly everybody's jumping down your throat for something or the other. I have to say, maybe because I have a lovely kind of brain that only retains good things and throws out all the rubbish, I can't actually remember something terrible that I've dealt with. Maybe I've dealt with one thing that was not at all nice. But you know what I told myself at that point, because I think it's very important, like it was very important for me to tell myself that. I told myself that if people love me, they know the truth. I know myself. I know the truth. I don't have to tell anybody anything else, because anyway, everybody talks and makes up shit and says whatever they want to say, and they believe what they want to believe. But people who know me, and I don't need to say anything more than that to them or to myself. And if anybody has to ask me anything, all they have to do is pick up the phone and do that. And that's what I do in my life. If I feel that something is weird or something is wrong, or if I have a problem with somebody, I don't like go and talk to somebody else about it. However difficult it may be, I pick up the phone and I talk to them straight up about whatever it is. And I expect people to do that with me too. So this is how I deal with it. And I also feel like this is something that my mother has always told me, because I've always been a very sensitive child and I continue to be very sensitive. So my mother always said that, you can only be the best, your best self. And I think for me, it's very important to be a trusting, happy person and do my best for everybody. If I'm angry with them, I'll tell them. If I'm happy with them, I'll tell them. But it's very important for me to trust people. And if they let me down or if they behave badly with me, that's their problem. It's a sickness in their head. And I can't cure it. But, honestly, there have been so many people, so many actors who I have seen dealing with a lot of rubbish. Yeah. And I think a lot of them have done it with a lot of dignity, you know. And I'm sure they have gone through a similar thing that I'm saying, and I know that I have been lucky. I really haven't dealt with this kind of negativity too much, and I hope I never have to. But the people who have, sometimes I really doff my hat to how they deal with it, and I think they deal with it very well. But I hope, apart from the publicly dealing with it well, I hope they are also able to deal with it personally. That's very important. You mentioned your mother, and I was going to ask you about this. Can you tell me the women who have impacted you most in your life? Some from, I'm sure, personal life, and some from the industry, who have contributed knowingly, unknowingly, and shaped you some way? I think a mother figure is always somebody who is very, very important, because you learn by example, by watching them, you just imbibe from them. So for me, my mother is very, very important in my life. Very strong from within, very gentle on the exterior, very artistic. Like you. I'm a rowdy compared to her. Really? So you can imagine how gentle she is.
And also just this you there are certain things that only a mother can teach you, and you can't even put it in words. It's something you just imbibe. So I think my grandmother, very, very important. My entire 5-year-old personality is from my grandmother. And the fact that I am very determined and I will figure a way, like a solution to anything that's put in front of me, that's my grandmother. And my dance teacher, my guru, her, all very strong women, all very amazing, like beautiful women inside out, very inspiring women. Yeah. And I think any nurturing mother figure in my professional life as well. I'm just looking forward to so much Thank more. you. Big hug. Big hug. Lots of love. I hope you have a good day ahead, and I will talk to you soon. Thank you so much.